ओम ज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। वन्देऽहं श्रीगुरोः श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वतं सावधूतं परिजनसहितं श्रीकृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्णा करुणा सिन्धो दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिकान्त राधाकान्त नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। नमो महावदान्याय कृष्णा प्रेम प्रदायिने कृष्णाय कृष्णा चैतन्य नाम्ने गौरतुषे नमः। तत्त्वात्मकं कृष्णं भक्तरूपस्वरूपकं भक्तावतारं भक्ताख्यं नमामि भक्तशक्तिकम्। श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौरभक्तवृंदा। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। जन्माद्यस्य यतोऽन्वयादितरतश्चार्थेषुभिज्ञस्वराट् तेने ब्रह्महृदायादिकवये मुह्यन्ति यत्सूरयः। तेजो वारिमृदां यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यं परं धीमहि। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। स्वस्ति अस्तु विश्वस्य खलः प्रसीदतां ध्यायन्तु भूतानि शिवं मिथो धिया। मनश्च भद्रं भजतादधोक्षजे आवेश्यतां नो मतिरप्यहेतुकी। आप सभी का स्वागत है आज के We welcome all of you to today's class on Srimad Bhagavad Gita. We are studying third chapter, verse 17 onwards. श्लोक में भगवान ने बताया कि उन्होंने In the previous verse, Bhagavan said that सृजन किया है, इसका he has created this cycle of in the material world, जो इस चक्र का पालन नहीं कर and one who does not follow this cycle lives a sinful life, जीवन व्यर्थ है, and his life is waste. मतलब कष्टदायक है। Waste meaning his life will be full of suffering, and he will also inflict suffering upon others. So जैसे एक नदी होती है और नदी का बहाव, so there is a river and there is the flow of the river. बहाव के साथ में If we move with the flow of the river, it will be very easy for us तैर सकते हैं to swim प्रयत्न नहीं करना without much effort. लेकिन अगर आपको
उसके विरुद्ध में जाना But if पड़ेगा, we are flowing against the current of the विरोध river, करना पड़ेगा। then we will have to तो इसी work प्रकार very hard. हर चीज का एक Similarly, बहाव है, everything has a flow. फ्लो है। इस सृष्टि क्रम का भी एक बहाव है, This चक्र बोलते हैं creation कि ये also जैसे has a चलता है flow. तो उसका It moves in एक क्रम है, उसकी एक cycle, रीति है, it has उसका an एक फ्लो order, है। it has its तो own अगर हम system. इसी के साथ में चलते हैं So तो if we हमारे लिए move along परेशानी का with कारण the नहीं flow of the बनेगा, लेकिन अगर creation, हम उसके विरुद्ध then में it will जाएंगे not be difficult for us. तो But if we परेशानी go होगी। against the flow of the creation, then we will have to, और ये एक then our चक्र life will be full of suffering. And जैसे हमारा अपना this शरीर है, principle is applicable in every part of life. प्रकृति से Like बना we हुआ have है, our body, our mind, तो they are all उसका made of अपना एक prakriti. स्वभाव है, So they have their own उसका swabhava, अपना एक बहाव है। they have their own तो flow. अगर हम उसके अनुरूप कार्य करते हैं So if तो we हमारी work दशा अच्छी according to होती that, है। then our और life अगर functions हम उसके smoothly. विरोध में काम करते हैं And if we work तो against that, समस्या खड़ी हो जाएगी। then there will be problems. तो वही बात भगवान यहाँ बता रहे थे अर्जुन That को is what Bhagavan was कि also दो निष्ठा explaining है, here, that there are कर्म two योग्य के दो प्रकार हैं, nishtas, कर्म or योग्य you can और say एक one ज्ञान योग्य nishtha, निष्ठा। but is of two तो types. आपको अपना One is स्वभाव of देखना Karma है Yoga, one कि is of आपका Jnana जो Yoga. स्वभाव है, So you आपका have जो to check कर्म your योग है, swabhava ज्ञान योग है, if it is तो according to उससे Karma आपको Yoga, but if you enter उससे Jnana Yoga, then there will be lot of स्वभाव ज्ञान problem. योग का But है। if your swabhava is of Jnana Yoga ज्ञान and you योग से are आप चल रहे हैं qualified for कर्म that, योग, तो उसमें but if you समस्या नहीं enter आएगी। Karma Yoga, then also there will be इसलिए trouble. यहाँ कहा था कि एवं That is बुद्धि why Bhagavan said, योगम नानुवर्तयति है अघायुरिंद्रिया रामो मोघम पार्थ स जीवति। और अर्जुन को यही सलाह दे रहे हैं कि आप कर्म कीजिए, this लेकिन is what कर्म जो है Bhagavan is advising to Arjun, शास्त्रीय रीति that से you should करना है, perform karma, but कर्म karma योग should be done according to the injunctions of Shastra, क्योंकि not मनुष्य according to ने one's own जो whims and अपना fancies. जो चक्र प्रवर्तित किया है If one is just उसके doing अनुरूप whatever हम he गति likes, कर रहे हैं। then he is not functioning according to the cycle of तो the creation. ये जो 17वां श्लोक है, So this 17th इसको verse दो तरह से देख सकते हैं आप। एक तो ये can है be कि अगर analyzed हम in two कर्म योग ways. करते रहेंगे तो एक One ऐसी is, स्थिति if you आएगी continue doing karma yoga, you will reach a state आपको कर्म करने की आवश्यकता where नहीं there होगी, will be no more any need for you to करते perform रहेंगे। karma. अब आप You can फल नहीं continue to भोगोगे, perform karma, but you will not be dependent on karma, क्योंकि कर्म योग का फल जो है because the वो fruit of karma yoga आत्मसाक्षात्कार होगा। कर्मणि is भी संसिद्धि मास्तिता self जिसमें कि realization. और दूसरा तरीका ये है कि उन्होंने And दो the निष्ठाएं second बताई थी method of analyzing is, कि जो Bhagavan had दूसरी spoken of two निष्ठा है nishtas. So one who is in the second वो क्या nishtha, स्थिति है, उसके what बारे में is यहाँ his बात की। situation, तो that एक is कुछ लोग explained ऐसे here. हैं Because there are some जैसे people सुखदेव हैं, कुमार like हैं, Shukdev or the four जो Kumaras ज्ञानी पुरुष हैं, who are जैसे Gyani, भागवत में जड़ भरत की कथा आती है, they are तो knowledgeable, वो or कर्म like भी नहीं कर रहे in हैं, Bhagavad we have the Katha of Jad Bharat, he who was और not performing any karma, भगवान ने कहा है he कि was यज्ञ not करो। participating in any तो yajna, चक्र and रूप में Bhagavan is telling that I have made this cycle यज्ञ of व्यवस्थित yajna, है, and he had said that इसलिए everything is इसको situated in yajna. नित्य यज्ञ प्रतिष्ठित, यही कहा ना उन्होंने कि This is what he had said, यज्ञ, और यज्ञ से ही सृष्टि हुई that the और creation प्रजापति ने was आहुति made दिया। from yajna, तो and इसलिए in the यज्ञ beginning से ही सब Prajapati कुछ है। made yajna. So तो everyone should ऐसे engage in लोग अगर yajna. हम कहेंगे कि वो पाप में So then, what डूबे about हैं, people like Shukdev, जैसे four सुखदेव Kumaras, हुए, or जड़ भरत हुए, Jad कुमार Bharat? हुए, Are they living a या sinful life? ईश्वर याज्ञवल्क्य के ज्ञानी Or rishis like अष्टावक्र, Yagyavalkya, Ashtavakra, तो who are great ये gyanis? ये So for सभी them, कैसे Bhagavan हैं? is speaking ये this सब verse, कहते हैं यस्तु आत्मरति रेव स्यादात्मतृप्तस्य मानवः आत्मन्येव च संतुष्टः तस्य कार्यं न विद्यते। परंतु translation, जो व्यक्ति but the person केवल who delights आत्मा में only स्थित in the रहता है, self, who जो is आत्मा में स्थित रहता है, self-satisfied and content in the तथा self alone, आत्मा में ही has स्थित no रहता है, duties to perform. उसके कोई कर्तव्य नहीं होते। क्यों? क्योंकि जो कर्तव्य बताए गए हैं, जो Why? विधि निषेध जो Because the शास्त्रों में बताए duties, गए हैं, the prescriptions and वही यही prohibitions है which कि are mentioned in Shastra, they आत्म have साक्षात्कार, a duration. They end भगवत at प्राप्ति, आत्मा के द्वारा at self-realization.
Here, Atma can be taken in both ways. The Atma, which is referred to as soul, or as Bhagavan also. So the point is that those one who is dedicated to Bhagavan and rejoices in that only, that person does not have any duty to perform anymore. Like it is said that when a person takes shelter of Bhagavan, he becomes free from all karmas. In Gita also at the end Bhagavan says this, that you take my shelter and I will relieve you from all the papas, which means relieve you from all the karmas. Why? Because the purpose of karma is to take you to that level. और जो वहां पर पहुंच चुका है, And one who has reached that state, one who has reached the state of taking shelter of Bhagavan, the law of karma does not apply to that person. That is what Bhagavan is speaking here, that one who delights in the self only, तो वो फिर कर्म के सिद्धांत से ऊपर उठ गया, then that person has risen above the law of karma. The prescriptions and prohibitions of karma do not apply to such a person, because all the shastras that we have, their purpose is भगवान तक लाना है, हमारी to bring us to Bhagavan. जो मानसिक स्थिति है, हमारा जो भाव है, हमारी जो बुद्धि है, वो Our भगवान mental में लगे, state, our intelligence, our bhava should be immersed in Bhagavan, विषय भोग जिनमें हम लिप्त हैं, and the all the sense enjoyment in which we are currently immersed, we should get relieved from that. This is the purpose. का ये जो तंत्र खड़ा किया है शास्त्र ने, And the whole law of karma has been created by Shastra for this purpose only. So the purpose who has reached that state where he is नियम तो delighting in the self alone, for him the law of karma does not apply. Because laws have their own purpose. Law is not meant for law. Law has some other purpose. One who has achieved, reached, attained the purpose of law, तो इसलिए कहते हैं कि जिसका the law does not apply to him anymore. और जो आत्मा से ही तृप्त है, So one who delights in the self alone, लिए फिर कोई कार्य बचता नहीं, for him there is no more any duty to be performed. Meaning there is no restriction on that person that he has to do something or he cannot do something. It does not mean that he actually does not perform any work. He will still work, because Bhagavan has told earlier only that there is no person in the world who can live even a moment without performing an activity. That is why those who are the Jnani, is those who have achieved Bhagavan, they will also work. But these restrictions do not apply to them. What is to be done and what is not to be done. Because whatever they will do, they will not do it for their own sake, for their sense enjoyment. They will do it as a seva to Bhagavan and seva to this world, because this world also belongs to Bhagavan only. So they will always be engaged in activities meant for others' sake. So there is no point in telling them what to do and what not to do, because what should be done, they are anyway doing that. So that's why here Bhagavan is telling that there is nothing remaining for such a person to perform. So in this verse there are three words. One is Atma Rati, one is Atma Tripta, and Atma Santushta. Actually, the Tripti, Santushti, and Rati, they are like synonyms only, and all the three are mental states. Somebody has Priti, Tripti, or Santushti, that is in the mind only. So their state is in the mind only. But these are the bhavas in the mind. Although they, but still there is some difference in them. The word Rati means Priti,
in भ्रमण which करता है। रति our शब्द mind रति धातु delights. से आता है। रति शब्द का प्रयोग भक्ति साहित्य में भाव के लिए, In the Bhakti प्रेम के literature, लिए, Rati word has been used for bhava, prema, preeti. लौकिक भाषा में रति शब्द का In प्रयोग the worldly language, वो the लौकिक word प्रीति के लिए किया Rati जाता is है। used for the भक्ति material साहित्य में love भी रति also. का If you प्रयोग study the लौकिक प्रीति worldly के लिए भी literature, होता है, then दोनों के the लिए word किया Rati जाता is है। used for material love प्रेम के also. लिए भी, So this word Rati is used for और रति love शब्द का towards प्रयोग Bhagavan as well as the material love. सहवास के लिए भी किया जाता है, The word Rati चाहे उसमें is लौकिक क्रीड़ा also हो या used वैवाहिक for श्रद्धा हो। sex enjoyment between man and woman. तो यानी कि वो अपने आत्मा में ही रति करता है। It और आत्मा means शब्द का जैसे the मैंने कहा अर्थ so here है it what it कि means is that the जो person प्राण है उसका मन does Rati in the उसी Atma आत्मा में रमण itself, करता है meaning he is delighting in the self alone. और उसी में क्रीड़ा करता है। इसलिए उपनिषद का भी एक वाक्य है, आत्म So क्रीड़म Upanishads also आत्मविद्या have this statement. ब्रह्म विदाम वरिष्ठ, कि जो ब्रह्म को, जो ब्रह्म वेत्ता हैं, Those who are ब्रह्म का ब्रह्म अर्थ Brahmavetta, होता है, ब्रह्म का मतलब है where Brahma has two meanings. Brahma means Tattva Vastu and Brahma means Ved जो also. वरिष्ठ हैं, श्रेष्ठ So हैं, those who are qualified, जिनका those who अधिकार are है, वो advanced in the ब्रह्म में understanding of करते Veda हैं रति, or वो Brahma, आत्मा में ही रमण there करते हैं, आत्मा में ही क्रीड़ा करते हैं। they delight in the self alone. तो यानी कि उनकी रति स्त्री आदि में नहीं होती है, Which इस means that संसार में they do not derive भौतिक कामना in से the वो प्रवृत्त they do not derive love from the association with the other इच्छा gender. रहती है In उसको material world, आपस में एक दूसरे से मिलने की, every person और उसी में वो अपनी delights तृप्ति in associating महसूस with the करते हैं person of the other gender, या उसमें तृप्ति and खोजते हैं, or at least searches for क्योंकि delight and enjoyment in वास्तव में such an association. कभी किसी की वास्तव में तो तृप्ति होती नहीं है, Actually, nobody केवल can be तृप्ति बढ़ती satisfied जाती है। by fulfilling the sensual जैसे desires. कहा In fact, sensual desires will न increase. जातु काम कामा नाम उपभोगे न साम्यते, कृष्ण वर्ष कृष्ण वर्त हविषा एव पुनरेव विवर्धते, कि हमारी जो कामनाएं हैं Our desires उनको आप भोग वस्तु से शांत करने की cannot be इच्छा करते fulfilled हैं, by sense वास्तव में वो objects, शांत होती नहीं है। although we ऐसा think like हमको that, भ्रम होता है that desires will be fulfilled by कि sense उससे objects. हमारी It is कामनाएं our पूरी illusion. हो जाती है, लेकिन वो दोबारा से फिर और बढ़कर आती है, क्योंकि उसका एक Because these संस्कार है। desires again arise with more सुखानुस्मृति power. कहा, योग सूत्र में कहते हैं कि In Yoga Sutra, सुख it is में said संस्कार पड़ता है, that उसको राग बोलते हैं, when we enjoy, we get the राग से फिर samskara of राग sukha, that is rag. Rag leads इंद्रिय to desire, भोग के लिए फिर and then the अधिक person दौड़ता है। runs इसलिए even अगर more रति for का fulfilling अनुभव such करें तो desires. उसका सहवास लें तो उससे फिर So, if तृप्ति the मिलती है। meaning of rati is taken as sexual enjoyment between man and woman, then that desire, sexual desire, is never satisfied. In fact, it keeps increasing more and more. थोड़ी देर So, बाद this principle नींद आ applies in जाएगी, every part हल्का aspect in our महसूस होगा, the material जगना life. नहीं है। If you are लेकिन जो hungry भी आप and you eat वस्तु food, भोग it करते does not हैं mean that you will not feel hungry again. तो थोड़ी देर के So, लिए whichever object you वो enjoy, शांत हो for जाता है, some उसके time the बाद फिर desire वही gets आता है, suppressed उसी or प्रकार may से be fulfilled, आप थोड़ा but then it again arises थोड़ी देर with के more लिए vigor, more power. तुरंत होती सी Like दिखाई if देती you है, put fuel in लेकिन the fire, for some time it appears that उस the पुरुषार्थ fire को is getting doused, but then the पुनः fire, एव विवर्धते, there will be और more विशेषीकृत fire होकर आता later. है। It will be more इसी powerful. प्रकार सारे भौतिक Similarly, विषय इसी प्रकार से हैं, हमारी all कामनाएं थोड़ी the देर के लिए sense objects, all the sense पूरी हो जाती enjoyment, है, they fulfill our लेकिन desire उससे for तृप्ति नहीं होती for है, some time, संतुष्टि नहीं होती। but then the desires arise with more power, which तो means इसके the लिए desires are actually never आत्मरति satisfied. That's why here it is said, Atmarati Reva, आत्मा में ही that रमण such a करता है, person इसलिए उसको इंद्रियों की mentioned in this आवश्यकता verse नहीं पड़ती। delights in the self alone. He doesn't need any sense enjoyment अगर because हम थोड़ा सूक्ष्म दृष्टि से if we अवलोकन करें, analyze इसको ध्यान minutely, दें, if we तो investigate समझेंगे carefully, we will कि find उसको जब हम that भोगते हैं तो वास्तव any में sense उस object, वस्तु से when we हमारा enjoy that,
we do not derive any pleasure from that sense object itself. But whatever desire, longing we were having for that sense object, it created a sort of lack of fulfillment or a disturbance in our mind, because all the every material desire creates disturbance in the mind. In Bhagavatam, it is said that this hope for material fulfillment, they disturb our mind, and this full disturbance is related to some object only, whether it is some person or some object or wealth or post position. We have desires for all these things, so our mind remains disturbed for all these things, and when we achieve these objects, then that desire subdues and our mind becomes peaceful, because the object which was, because that disturbance is no longer there. So we feel that we actually got happiness by that object, but actually the happiness has not come from that object. If happiness would have been coming from that object, then we would always be deriving happiness by associating with that object. Like sugar has sweetness, so sugar will always be sweet. It is not that where you feel sweetness, you feel the sweet taste only when you have desire for eating sugar. No, if even if you do not have the desire but still you taste sugar, you will feel the sweet taste only. Similarly, if some object has got happiness inherent in it, then whether you desire or no, when you if you associate with that object, you should derive the happiness. But no inert material object has any amount of happiness. Like sugar has got sweetness, and salt has its own salty taste. That taste always remains in that object. Similarly, if any object that you are desiring, if it has sukha or happiness in it, then it should always give us happiness. But this does not happen. When our desire is no longer there, we do not derive happiness from that. When you were a child, you were desiring toys, you enjoyed them, but now if somebody gives you toys, you will throw it away saying, do you think I am a child? But if those toys actually have happiness inherent in them, then you should still be able to derive happiness by associating with those toys. And if there is happiness inherent in it, then everyone should be able to derive happiness, because it is not that only you feel the sweet taste in sugar and people in other countries do not feel that. So with this analysis, we understand that there is no happiness inherent in the sense object. The feeling of happiness that we derive is because earlier our mind was disturbed when the object was not there with me. Now that we have attained that object, that disturbance is gone, and we feel that as happiness. If you have hunger, you derive happiness in food, but you do not have hunger, then you start vomiting after eating. Because now you do not have that desire. But if you are extremely hungry, whatever is served to you, you will eat it happily and you will say that you like that food. So actually, happiness is not derived from material object, because material objects do not have happiness inherent in them. How will you derive that? How can you get something which is not there? Bhagavan will tell later. All the sense enjoyment that we get by sparsha, they are causes of dukkha. Why? Because when they give us sukha or give us the feeling that we are getting sukha, then we get that samskara of sukha, and then later that same samskara puts us into misery, because always we will not get that object. Then you will have desire and you will not be able to fulfill the desire, and then you will be miserable. Or maybe you want in a specific quantity, you do not attain in that quantity, or in a certain way but you do not get it in that way.
So there are many reasons. किसी का इसलिए कभी भी That is why इन भोगों से nobody has ever been संतोष हुआ नहीं, satisfied by sense चिंता enjoyment. होगी, And this will never चिंता happen in होगा future also. कि उनमें जो And what is its सुख है fundamental वो सब cause? कोई चीज The नहीं है, reason? The reason is केवल एक भ्रम the का sense मात्र है। object cannot तो give you इसलिए भगवान satisfaction or इस बात को happiness. स्पष्ट कर रहे हैं कि That's why Bhagavan is clarifying that here. तस्य मानो। तो इसको ये बहुत विचारणीय बात है, बहुत So this is सावधान से something that should be deliberated very बात है carefully. कि Although हमारा it may appear very simple, but it has very हमारी deep meaning. उसका क्या होना Our चाहिए, what should be the ये सब भोग goal of our life? या आत्मा की Should it be all deriving all these sense objects तो जो or भोग attaining पदार्थों self को पा realization? लेते हैं तो वो Those who are working hard all the time दुखी रहते for हैं, attaining अंधकार में sense रहते हैं, objects, they are always miserable तो and they जन्म तो die हुए और in अंधकार में पड़े misery. रहते हैं। They cried when they were born and they will cry when they die also. इसलिए आत्मा को That is मरना why चाहिए, we आत्मरति। should understand the principle of Atma. तो ये जो We should accept the यहाँ पे principle of Atma. शंका ये हो सकती है, अगर Now, थोड़ा here there may be a doubt दृष्टि से if विचार you करें, analyze in a philosophical way. कोई शंका कर सकता है। Someone may raise a doubt. याज्ञवल्क्य और मैत्रेयी की कथा है, The story between वहाँ Yagyavalkya and उपदेश Maitreyi, देते हैं when मैत्रेयी Yagyavalkya ji कि नावय मृत्यु instructs कामाय Maitreyi, प्रियो भवति अपितु आत्मने कामाय एव एंड सर्वम आत्म कामाय एव प्रियो भवति। तो कहते हैं कि पति को पत्नी इसलिए he प्यारी नहीं है कि says वो पत्नी है, the husband doesn't या like the पति wife because she is wife. The wife does not like the husband because he is husband. They like each other सब because of the चीजें जो Atma. भी प्यारी लगती है वो Whatever आत्मा we को प्यारी like, लगती है। it is all for the purpose of Atma only. तो इससे ये सिद्ध होता है कि आत्मा So में ही this स्वाभाविक proves रति है। that the natural rati is in the Atma only. अगर आत्मा के कारण ही सब It चीजें is for प्यारी the लगती Atma हैं only. Because तो if everything is जो liked हमारी रति for है Atma वो only, आत्मा में that स्वाभाविक है। means our rati is naturally there for the Atma and we do not need any instruction for कोई that. व्यक्ति भी है तो वो भी तभी तक प्यारा है जब तक उसमें आत्मा है, If we like पहली any बात तो ये है। person, we like him only as long as the Atma is तो जब present हम in the जीवित body. हैं तो वो तभी तक If प्यारा he is है not living, जब तक उसमें हमारी आत्मा है, जब उसको हम अपना then मानेंगे। also we like लेकिन that अगर हम person, अपनापन छोड़ and देंगे even if the person is living, we like किसी that की भी person दृष्टि only में, as आप long किसी as जीवित व्यक्ति we देखें, have आपका connection अपनापन with नहीं that है, person, we like him. उसी में आपको प्रीति होती है जिसमें आपका अपनापन नहीं है, There are उसमें so आपको many कोई आनंद people, नहीं आता। we have preeti only for those बाद में people जब अपनापन खत्म हो जाता है तो for उसको whom we feel दुश्मन connection. मानने लगते हैं। Otherwise, we may even consider that person तो as इसका our मतलब enemy. आत्मा में ही प्रीति हुई, That means preeti is for the Atma only. तो ये तो स्वाभाविक ही है, तो इसमें कहने की क्या So that आवश्यकता is है। natural. Why does तो Bhagavan इसका have to यही है instruct कि for that? वास्तव में प्रीति तो आत्मा में ही है, क्योंकि हमको आनंद The आत्मा point से is ही that आता है। actually preeti is for the Atma only because we get मूल Anand सोर्स from the तो Atma only. परमात्मा है, तो वास्तव में And आनंद the उन्हीं से आता original है, source of Atma is वही Paramatma. परमात्मा So है। actually Anand is coming from तो him इसलिए only. शरीर में प्रीति है। Currently we are considering our body as the self. That's why we वास्तव में have तो preeti for the शरीर भी body. आत्मा नहीं है, But actually the body is also not लेकिन जो Atma. आत्मा की भी आत्मा है The Atma of the वो है Atma is Bhagavad. कृष्ण में नम अवेहि त्वम आत्मानम अखिलात्मनम सो पितृ देहि वा भाति माया, कि ये भगवान कृष्ण जो है ये सब आत्माओं के भी आत्मा है, Bhagavan इसलिए Krishna इनको is the Atma of all the Atmas. That is why also he सबका is called मूल Paramatma. केंद्र जो है So वही है। actually, the real center of हम इस बात Preeti को is नहीं समझते Bhagavan हैं जब only. तक हम Until and unless we understand this, इसमें प्रीति we करते will keep रहेंगे running कि here and इसमें there प्रीति करो, that have या Preeti for चाहे this or that. But nothing is दूसरे को permanent in प्यारा this बनाओ, world. Everything जो होता is रहता है। always changing. तो स्वाभाविक प्रीति आत्मा में है, लेकिन हम So जब अब naturally, Preeti जिस is there जिस for the प्रीति को कर Atma. रहे हैं वो भ्रम के But now कारण the कर रहे Preeti हैं, that we are having for the other gender, तो that इसलिए is उसको हम out of इसलिए illusion, we are आत्मा नहीं considering मानते। them also as Atma. And that is अगर why वास्तव we में are आत्मा not में getting रति होती satisfied. तो उससे फिर तृप्ति होती, If we would actually have rati for the लेकिन Atma, किसी then की we would have तृप्ति been हो satisfied तो उसको also. आप अपना So आत्मा now समझेंगे। why nobody is satisfied because अगर आप रस्सी को साफ what a करेंगे तो person is उसमें रस्सी considering में as कुछ भी Atma, होगा that नहीं, is the body, that body is not the Atma.
You may consider the rope as snake, तो but it is not snake. उससे आपकी तृप्ति नहीं होगी। तो So that यही will not give you satisfaction. अंतर है कि अगर वास्तव में आत्मा में ही रति होती तो फिर आप If कोई rati स्थिति would को actually छोड़कर have दूसरी been for तरफ the atma जाना only, नहीं पड़ते। then there would be no तो need कोई कह सकता है for भाई sensual enjoyment कि between man and woman. किसी को मिठाई खाने को मिल जाए, लड्डू खाने को मिल जाए, चॉकलेट मिल जाए, Now कहते हैं somebody बड़ा may say, आनंद what if होता है। somebody gets happiness by eating rasgulla or तो chocolate, कहेंगे and कि then he says that I मेरी तृप्ति enjoyed हो it गई। very much. I am tripta, I am satisfied. लेकिन अब किसी को डायबिटीज है But या what किसी if का somebody मोटापा has है diabetes या or उसका low digestive fire, उसकी पाचन शक्ति weak digestive ठीक fire? नहीं है, तो वो तो इन चीज़ों में इनको खाएगा नहीं, दूर छोड़ेगा इनसे। So such a person will तो not क्या eat वो this rasgulla, तृप्त chocolate, हो and रहा all. है क्या? So is that person also getting वो satisfied? तृप्त नहीं हो रहा, वो तो दवाई खाता है ना कि मेरे को No, भी he is not getting satisfied. He मेरे को is भी कुछ taking medicines. इंजेक्शन लेके मिठाई खाने की इच्छा करते हैं। There are many people who have diabetes. They take injection and then they want or to eat sweets. तो उनकी उनमें संतुष्टि नहीं है। So they तो also do इसलिए not मुझे नहीं have सोचना चाहिए कि मेरे को satisfaction. हो गया तो ये So we should not साटिस्फाइड, think क्योंकि ऐसा लगेगा कि that if this person has got diabetes, he is satisfied, because you may think he is not eating स्वीट पी sweets. रहा है, That is why he is satisfied. He is just कुछ eating पकौड़े वकौड़े dal खाना soup. खाता है, He is not taking any pakoras or anything. तो इसलिए इसका ये आत्म तृप्त है। नो, वो इसलिए नहीं That खा means रहा he है is कि उसकी self-satisfied. परेशानी हो जाएगी, No, he is actually not eating because he is afraid that if he eats, ऐसा he will नहीं get है, into trouble. वो तृप्त नहीं है। He also has the desire. He is तो not satisfied. ये तृप्ति जिसकी होगी उसकी इच्छा नहीं So होगी, one who is satisfied, he will तो not have इसलिए that desire कहते हैं anymore. आत्म तृप्तस्य मानव। तो ये तृप्ति और संतुष्टि शब्द These हालांकि words एक Tripti and जैसे हैं, Santushti, although they are synonymous, तृप्त धातु से है, एक one is from तुष Trip धातु से Dhatu है, and one is from Tush Dhatu, लेकिन थोड़ा अंतर है। तृप्ति but शब्द still का there is प्रयोग little खास difference. करके The word Tripti किया जाता is है generally used भोजन इत्यादि के लिए, जो भोग्य for पदार्थ हैं। food, etc. इसलिए कहा ना, जैसे यहाँ उत्तर भारत में हिंदी जो भाषी हैं वो लोग कैसे बोलते In the हैं North India, भोजन the Hindi करने के बाद speaking कि मेरा people, भोजन they हो गया say, भैया, when they get food, they say that now I am का प्रयोग Tripta. किया जाता It's है। generally they use the word Tripti for food. तो जो स्वयं से ही तृप्त है, So यानी कि one वो who अपनी is तृप्ति बाहरी वस्तुओं satisfied में नहीं in ढूंढते हैं। himself only means he doesn't search for happiness जो in भोजन की food तृप्ति ढूंढते हैं or वो तो satisfaction in वो food, हमेशा उस तरफ because there अपना are people who also search भोजन for चढ़ा के happiness and रखते हैं satisfaction in food. कि क्या भोजन रोज In our मिलेगा। institute, generally I hear complaints what लेकिन type जो of आत्मा में ही prasad they तृप्त है serve, always वो same भोजन खाएगा same तो type. तृप्त रहता But है। one who is self-satisfied, अपनी he तृप्ति will को eat बाहरी the भोजन में नहीं ढूंढेगा, same meal daily, because such a person is स्वयं not में ही तृप्त है, searching उसको बाहर for नहीं जाना है। satisfaction in food. One who is self-satisfied, why does he need to खासकर derive मीठे को satisfaction in the बाहर food? ढूंढने की थोड़ी जरूरत है। Sugar has ऐसा नहीं sweetness है, inherent in it. Will it search for sweetness यदि कोई outside? व्यक्ति अपने It आप is में ही sweet तृप्त itself. है So तो one who उसको is बाहर नहीं जाना है। self-satisfied, why will he search for satisfaction from external source? तृप्ति फिर वो भोजन केवल अपना शरीर यात्रा के So लिए करेगा that वो। satisfaction, he will take food हाँ, just to maintain his body. जीवित यावत जीवित लाभो जीवित यावता, तो जितने से हमारा जीवन चल जाए He will consume that much उसके which लिए is उसको जो sufficient to अपने maintain his अनुकूल भोजन उसको कर body. लेगा, तो उसमें Life can कोई continue. विशेष इच्छा नहीं रहेगी He उसकी will कि not मुझे have any भोजन में specific desire for any ऐसा नहीं मिला specific वैसा नहीं मिला, तो उसको बोलते हैं specific type तृप्ति। of meal. So this such a person is called दूसरा है self-satisfied. संतुष्टि। Then the another word तृप्ति का is santushti, contentment. तृप्ति का मतलब सेटिस्फैक्शन अंग्रेजी में Tripti है, means satisfaction और and santushti संतुष्टि means का अर्थ है contentment. कंटेंट। तो एक आदमी अपने अंदर संतुष्ट महसूस करता है So a कि person, मेरी जो one स्थिति person, है, there is one जो person धन who दौलत feels वगैरह की satisfied जो स्थिति within है, मैं उससे संतुष्ट हूँ। whatever और एक wealth आदमी व्यक्ति है position जो he उसमें has, संतुष्ट ही and नहीं the है, other उसमें person कमी who पेशी is या असंतुष्टि always रहती है। dissatisfied. Whatever he may have in his life, whatever he तो ये may get, he संतुष्टि remains ये dissatisfied. आत्मा से ही होती
So this satisfaction also happens due to Atma only. तो ये तीनों एक साथ हैं वास्तव में, तीनों मिले ही हुए हैं, So all these लेकिन three are फिर भी same only. उनका भेद करके यहाँ पर हमको Still, बताया there is slight differentiation between them, कि as explained here. ऐसा व्यक्ति जो है, ताकि हमको पता चले, ऐसा ना हो कि कोई आदमी बीमार है That such a जिसके person, कारण वो बहुत साधारण भोजन खा रहा है, तो आप सोचें कि ये तो बड़ा तृप्त व्यक्ति है। otherwise, if somebody is sick and eating very simple food, you may think that such a person is self-satisfied. से जो भी So हमने you have to प्राप्त किया understand है उससे properly. हम संतुष्ट हैं, So whatever wealth we have, if we are satisfied with that, ट्राई करके किसको कितना धन चाहिए, generally how much wealth one इसकी कोई needs, सीमा नहीं है, there is no limit to जिसको that. जितना मिल जाए उतना कम ही No लगेगा, matter how much one gets, he always और feels उसको that it कभी is not संतुष्टि नहीं sufficient. होता है उससे, He is never satisfied with the, nobody is satisfied और with फिर the जितना amount of wealth he उससे has. अहंकार बढ़ता And जाता when है। you get more wealth, then your ahankara increases. तो यहाँ जो कहा गया है कि जो आत्मरति So as आत्मसंतुष्ट it is होगा, said here, मतलब जितना है उसी में संतुष्ट रहता है, इसका one मतलब who ये is नहीं कि वो self-satisfied प्रयास नहीं करेगा, काम नहीं करेगा, वो doesn't mean करता that रहेगा, self-satisfied person लेकिन does उसको not work. संतुष्टि नहीं रहती है, But the point is that he does not have the feeling of ताकि dissatisfaction. अपने अंदर वो आनंद की अनुभूति करता है। He feels, he delights internally. तो इसलिए हमको ये देखना है अपने जीवन So में we have to see in our कि हमारी life रति किसमें है, that हमारी what तृप्ति is that किससे in है, which that satisfies और us. हमारी संतुष्टि किससे है। What is it that makes us feel content? ये What is it आत्म in which we have rati? विश्लेषण करना चाहिए, So this is a self analysis that we तो should इससे do. हमको पता चलेगा कि हमारी क्या That स्थिति है, by that we क्या will हम सही understand मार्ग में रहते our हैं। current विशेष state, तौर से उनको इस बात का especially in विश्लेषण the करना चाहिए, spiritual life. क्योंकि जो Those who are आध्यात्मिक on the spiritual path, they should व्यक्ति है especially analyze this. Because those who are not वो interested in मार्ग spiritual में life, है, what is the point in telling और them? उसको देखना But चाहिए those कि who have वास्तव में entered हमें the spiritual path, किसके लिए हम they पागल should हैं, check that what is it और for which we are mad. किस भोजन के बगैर हमारा प्राण निकल जाता है, What is that हमको specific लगता है कि food हमको without खाया ही which नहीं है कुछ, we feel that we have not सब eaten बीमार है only, ना, तो उनको we will लगता है die? Because there are some उसको people, भोजन ना मिले तो they कहते if हैं they कि do हम not ठीक get नहीं है। their specific type of food which they like, then they say that what type of food is तो ये this? I don't देखना like है, this. तो उससे आपको So पता you have to चलेगा check कि yourself. आपका By that you will understand what is the center of your life. हमारा जीवन का केंद्र जो है वो हमारी कामनाएं हैं, हमारी आसक्तियां हैं, Our material desires are the center of our हमारा life. जीवन Our चलता है, attachments are the center of our जैसे life. वो Our तेल life होता है ना, तेल rotates around these desires and attachments. तो पुराने जमाने में तेल निकालते थे तो बैल घूमता था, In the तो olden days, उसका केंद्र बीच में the होता bull है, used to move और around. उसके चारों तरफ घूमता रहता है, या That was the method for कुएं से extraction of पानी oil, निकालते रहट से, तो बैल या ऊंट even जो for घूमता था taking पानी में, water out of the well. वो भी एक चक्र है। तो The मनुष्य bull का जो was employed for that. जीवन है वो प्राय करके उसकी कुछ So, कामनाएं, उसकी कुछ human beings' अपेक्षाएं, उसकी life is आसक्तियां centered हैं, around his और वो इसी desires प्रकार and घूमता रहता है, attachments, वो and he इसी always प्रकार से चलते rotates जाता है, around those और attachments. उसको प्राप्त कुछ होता नहीं है, And what does he get out of this? Nothing. पूरी हो जाएंगी, Because the desires will be कुछ बातें fulfilled. पूरी हो जाती But हैं the तो फिर वो speciality धीरे of धीरे चले desires जाते हैं, is that when they are fulfilled, जैसे वृक्ष में before going away, फल आते हैं तो उससे they बीज निकल जाते हैं, उससे फिर they दूसरे, leave their children behind. तो इसी प्रकार कामनाएं जो है वो दूसरी कामनाओं को पैदा करती हैं, So desires give rise to other जब तक वो desires. कामना शांत नहीं If होती, your previous desire पूरी तरह से शांत नहीं became होती, satisfied, it is not शांति fully satisfied. अपनी Its generation will still जो continue. जाति है, प्रजाति, उसको छोड़ के जाते हैं, तो फिर उनको उनमें लग जाओ, तो एक के बाद ऐसा ही होता रहता The है। desires leave their इसलिए offspring हमको देखना before चाहिए leaving us. कि So we should हमारी check आसक्ति कहाँ पर है, हमारा that राग कहाँ पर है, हमारा what are द्वेष those किस things बात to से which है, we are attached. What क्योंकि are those things which आसक्ति we को hate. पराधीन करते हैं, Because we are controlled by these कोई attachments भी and aversions. व्यक्ति पराधीन होना नहीं चाहता है, हम लोग सब स्वतंत्र होना Everybody चाहते wants हैं, to live a free life. Everybody लेकिन wants स्वतंत्र freedom. तब होंगे जब आपकी But आत्मरति freedम is possible only when you have Atmarati, when you delight in the किसी self. पदार्थ में है,
As long as you are delighting in any other, any sense object, then till that time you are tied to it. You are subservient to that. That desire, whatever happiness you wish for, you are a slave of that type of happiness. That's why in our Shastras we have these words like Go Dasa and Go Swami. Goswami means one who has control over his senses, and Godasa means one who is a slave of his senses. So when we have material desires, then we become a slave of those material desires. गोस्वामी जी तुलसीदास कहते हैं कि जो पराधीन है उसको सपने में भी सुख नहीं होता, Goswami Tulsidas says that one who is not free, क्योंकि कई बार ऐसा होता है ना कि अपने he is सोते never वक्त happy. बहुत कष्ट हो रहा है, लेकिन जब आप Forget about the wakeful सोते हैं state. तो अच्छा सपना देख लेते हैं, When you are sleeping, at least you आपको अच्छा see भोजन have a मिल good रहा है, कम dream. से कम सपने में And तो in अच्छा the मिल रहा है day, ना, you may not get good food, but at least in the dream you get good सपने में food. भी सुख नहीं But होता, he says that one who is not free, he will not be happy even in the dream. Forget about the wakeful state. तो इसलिए That is why हमको उस पराधीनता से हटना है। we have to get rid of this type of life where we are controlled by our material desires. So the formula is given by Bhagavan here, that is Atmarati, meaning this person does not have attachments to external objects. He does not envy. He does not have any moha. So Raga, Dvesha and Moha, these three, सत्व रजस और तमस, ये हमको बांधते हैं। Sattva, Rajas and Tamas, they bind us. One who becomes free from this, उसका कार्य और कर्म दोनों शब्दों का वास्तव में एक ही अर्थ होता है, लेकिन so कार्य का Karya and Karma both have same meaning, उसको but करना Karya चाहिए, करना means पड़ेगा, what should be done, what has to be done, जो उसका कृत्य है, what is हैज टू बी supposed to डन, be done. तो उसके लिए फिर कुछ ऐसा करने के लिए रह नहीं जाता। So for क्यों? this person mentioned in this verse, nothing, no, these type of duties do not remain anymore. Because whatever he had to attain, he has attained. Now he is beyond the prescriptions and prohibitions of Shastra, he is beyond the material gunas, he is beyond karma. उद्देश्य है And the purpose of life, उसको उसने self realization, has been attained by such a इसीलिए person. यहाँ पर भगवान बता रहे हैं श्लोक That is what Bhagavan is आत्मरतिरेव स्यात्, explaining here. आत्मतृप्तस्य मानव आत्मन्येव च संतुष्ट तस्य कार्यम न विद्यते, क्योंकि आत्मा जो है Because वही परिपूर्ण है, Atma भगवान ही परिपूर्ण है, is पूर्णमद full पूर्णमिदं in itself. Bhagavan is also full in himself. पूर्णस्य Bhagavan पूर्णमादाय is complete. पूर्णमेवावशिष्यते। तो जब तक हम उन पूर्ण प्रभु को प्राप्त नहीं करेंगे तब तक Until and unless we do not attain the complete Bhagavan, आप जितना till that मर्जी time we प्रयास will करें, जितना remain मर्जी incomplete. No matter how much sense enjoyment we do, we attain wealth, आप post अपूर्ण नहीं position, होंगे, we will remain incomplete. भगवत से हमारी Because अपूर्णता समाप्त नहीं होती है। these things cannot make us complete. हम They भगवान cannot के give us अंश हैं, fulfillment. We मम belong to एवांश Bhagavan. जीवे, We are his उसकी anshas. परिपूर्णता So our के completeness, साथ our fulfillment is in संबंध होने से है। associating with him, in establishing relation with him only. जैसे शरीर का कोई भी अंग है तो वो Just शरीर like का अंग any इसलिए organ बना of the है, body, it is meant for सिर्फ the अंग body. के लिए नहीं है, The body is not for the शरीर के लिए है, organs. The organs are meant for the अंग जो body. अंगी के लिए है, The angas are meant for the व्यष्टि angi. जो है वो समष्टि के लिए है। Vyashti is meant for the ये samashti. भगवान बता रहे हैं ना, ये जो एवं That is what प्रवर्तते Bhagavan is ये telling. बता रहे हैं कि हम व्यक्ति हैं, हमारा That शरीर मन बुद्धि अहंकार चित्त सब प्रकृति से मिला हुआ we है, और we are प्रकृति से ही individuals. संसार है, Our body is made of this इससे ही prakriti, संसार which है, is this samsara. कर्मयोग की दृष्टि से देखा जाए From karma yoga point of view, संज्ञार्थात कर्मणो अन्यत्र लोकोयम कर्म बंधन, संसार हमारे लिए नहीं है। आज का the जो world is not meant for us. We are meant for the world. ये कि ये संसार Today's हमारे लिए education teaches that this world is meant for us. Everything is for our own enjoyment. ज्ञान है वो सिखाता है कि नहीं, मैं इन But our spiritual education अगर मैं teaches that इसमें we are काम meant for करूंगा this तो मैं world. पूर्ण हो जाऊंगा, When we work for this world, तो then we इसलिए will become complete. मैं संसार This is के the लिए principle of Karma Yoga. वातावरण के That for this world, for लिए, nature, मतलब यही है, for this environment, we उसमें work for it. पूर्णता होगी।
This is what yajna means. That is what will give a sense of fulfillment. But even more completeness will be attained when we understand that we are Atma and our Angi is the Paramatma, and we work for Paramatma, and we derive Preeti in Him. That is the real completeness. But if we think that Bhagavan is meant for us, we go to temple, church, or whatever and keep praying that Bhagavan, please give me this, please give me that. Then what is happening? We are engaging Samashti for the purpose of Vyashti. We are using the Angi for the Anga. So that will also not give completeness. Completeness is only possible when Vyashti works for Samashti. When Vyashti becomes dedicated to the Samashti, that will give the sense of completeness, fullness. That is what Bhagavan is explaining here. और इसी को आगे फिर थोड़ा और बोलते हैं, एक और श्लोक कर लेते हैं। नैव तस्य कृतेन अर्थो न कृतेन एह कश्चन न चास्य सर्वभूतेषु कश्चिदर्थ व्यपाश्रयः। Translation: in this world, such a self-realized person has nothing at all to gain by the performance of prescribed duty, nor anything to lose by the non-performance of duty, nor does he depend on anyone for fulfilling any purpose. So here there are three words: Kritena, Akritena and Vyapashraya. Artha means prayojan or purpose. So by doing any activity, he has no goal to be fulfilled. Because whatever he wanted to attain, he has attained. There is nothing above the beyond the Paramatma. So if he does anything, he is not doing to gain something. He does it, but just as a seva for benefit of others, not for any selfish motive. There is no injunction on him to do that. And akritena means not doing it. So Bhagavan said that earlier Bhagavan said you should do this and you should do, and if you do not do that, then you will incur sin. You will get into bondage. But for this person, there is nothing like that. Neither he has is to attain punya, nor he has to escape or save himself from papa. There is no purpose remaining for him to be fulfilled. So he is out of that cycle of papa and punya. So what was told in the told earlier, that there is no duty for him to be performed, so that is being explained here. He has gone beyond all that. So we act in two ways. One is to fulfill our desires, and other is because we are already relieved from the desires. So for fulfillment of desires, he is not going to do anything. His desires are already fulfilled. So now whatever actions he performed, they are all meant for others' sake. Either as seva or offering to Bhagavan. Karma yogi will work with Nishkama Bhava. He will offer everything to Bhagavan. And if he is a Bhakti yogi, then he will, whatever he will do for pleasing Bhagavan, for getting Preeti for Bhagavan. There is no object on which he will depend for fulfillment of any purpose. Because in this world, for fulfilling our goals, we need help from others. We have to depend on somebody. Even rich people have to depend on their servants. If somebody is driving your car, then you have to depend on that person. If that person falls sick, then you are not going to drive yourself, so you become dependent on the driver or no. So every person has to depend on somebody in this world. But this person, why is he not dependent?
He is not dependent in the sense that he has to fulfill some purpose from that person, because for continuing our livelihood, आसन निवासन जितना भी है our वो food, clothing, किसी shelter, दूसरे पर etc., निर्भर करता है, then so it will be dependent on लेकिन वो somebody. कुछ ऐसा उद्देश्य प्राप्त नहीं करना चाहता है जो उसको But प्राप्त this हो। person does not तो want यही कहने to का अर्थ है कि attain any ऐसे goal that he has सर्वभूतेषु not fulfilled ईश्वरत्थ व्यपाश्रय or he has not attained. कि वो किसी के ऊपर That is what is being किसी said here. उद्देश्य की प्राप्ति के For लिए fulfillment of any निर्भर नहीं goal, रहता he is not dependent on क्योंकि anyone, वो because अपने अंदर अब कोई अभाव महसूस नहीं he करता does not feel any dissatisfaction or emptiness within him. He does not feel that he is lacking in something. He does not have such feeling in ऐसा him. अनुभव नहीं करता है। अब वो संसार का जो चक्र है उसके साथ में उसने एकता स्थापित कर ली है। जो He has established चक्र चल रहा है a kind of harmony तो इसी में or वो oneness with the शांति cycle of के this साथ world. में गीत गाता हुआ So, as this world is moving, the cycle is moving, this person also जैसे continues इसमें his बताया life, गया delighting in the कि वो self. किस प्रकार से कार्य करता है So, as it was told in the तो previous उससे verse, how he बताया works, गया that is being कि वो explained here. यहाँ पर ये नहीं कहा है कि वो कोई That it is कार्य not नहीं said करता here that he will not do या वो anything, कोई आलसी या निकम्मा or व्यक्ति he है, will become बल्कि lazy. वो जो भी कार्य करेगा But the point is that उसके लिए whatever he will do, अपने लिए कोई प्रयोजन he नहीं है will not have any personal क्योंकि motive or goal to be fulfilled in that. अब वो अपने को जो है भिन्न Because दृष्टि से नहीं देखता है। he does not see himself as separate वो from समझता Bhagavan. He है does not have that कि separatist जैसे mentality. मैं इस From Karma Yoga संसार point of view, he understands की that I am a सत्ता part में of this world, हूँ, मैं and उनका as a दास हूँ Bhakti yogi, he sees that I am the तो servant of उसकी Bhagavan. इच्छा उन्हीं से मिल जाती है। So his desire is इसी तरह united with Bhagavan's desire, and इस that is his संसार में भी अगर enjoyment. हम देखें अगर दो व्यक्तियां If we काम see in this करते world हैं also, if two people their hearts are united, 50-60% भी मिल जाए even if they 100% की तो are बात अलग matching है, अगर 50-60%, forget 50-60% about 100%, दो even if व्यक्तियों का 50 to 100% मिल 60% जाए तो कितना two आनंद है। people's hearts are united, then how much pleasure is derived अगर in such a 100% relation. मिल जाए तो कितना Now आनंद है। imagine if it is united 100%, how much pleasure ये will be there. 100% मिलना जो है यही So भक्ति है। this 100% इसी unity को of समर्पण बोलते heart हैं, is bhakti. इसी को This is शरणागति बोलते हैं। sharanagati, this is अपने surrender, आप को उनके लिए प्रभु के लिए समर्पित कर देना। to offer तो oneself for the sake कोई भी of व्यक्ति जो भी Prabhu, for Bhagavan. And Bhagavan is not a selfish हमारे person. परोपकार के लिए He समर्पित is है, always हमारी भलाई के लिए thinking समर्पित है। about our welfare. तो इसलिए उनसे जब हम अपनी अपनी भावनाओं को, अपनी इच्छाओं को, अपनी कामनाओं को उनके ही समर्पित कर So देते when हैं we offer our तो उसमें फिर desires आनंद to ही आनंद for है। to उसमें Bhagavan, कोई then we आत्मरति derive ananda in या that. That is संतुष्टि Atmarati, नहीं Atmatripti, होती and है। Atmasantushti. और ऐसा व्यक्ति जो है फिर And such a person विधि निषेध से ऊपर उठ जाता है। goes beyond the prescriptions and prohibitions क्योंकि in Shastra. शास्त्र का प्रयोग जो है उस Actually, the प्रयोजन को purpose of प्राप्त कर Shastra लिया है, has been attained by this उसको और person, कुछ प्राप्त करने की आवश्यकता and नहीं there है। is nothing remaining for him तो to इसी को attain. भगवान यहाँ पर That is what बताते हैं इन Bhagavan is दर्शनों में। explaining here in these two तो आज verses. का प्रवचन यहीं So we will समाप्त करते हैं। stop किसी का the कोई class for प्रश्न है? today, and if you have any question, you can ask. यूट्यूब से एक प्रश्न है, किसी कनिष्ठ, मध्यम या उत्तम Question: अधिकारी व्यक्ति के प्रति अपराध करने का क्या परिणाम होता है? what is the लगभग result of सभी doing aparad to 50 some वर्ष Kanishta, के लिए Madhyam, or ज्ञान योग का Uttam अधिकार होता है। Adhikari? क्या जब Almost तक वे all devotees have कर्म adhikar विकसित नहीं कर लेते हैं for karma or तब तक jnana वे yoga. अधिकारी Until and पद का unless they do अपराध not करते get the हैं? adhikar for bhakti, are they doing देखिए aparad? अपराध का फल क्या होता है? अपराध का फल Answer: first ऐसा of है all, what is the कि result of आपकी aparad? रुचि जो है The result of aparad is that your भौतिक interest, इच्छाओं के, भौतिक you will lose your इच्छाओं, interest भौतिक in क्रोध, bhakti, भौतिक लोभ, and you will start becoming interested in material activities, in material sense enjoyment. संबंधित Your क्रियाकलापों में mind नहीं लगता। will no longer be interested in bhakti activities. एक उसका फल है। This is the result of aparad. अश्रद्धा हो जाती है।
and you will lose Shraddha in Shastra. के वचन सुनेंगे तो उसमें आपको शंका होने लगेगी You will start doubting the Shastra, कैसे हो सकता है, that how is this possible, उसमें आप फिर त्रुटि देखेंगे, and you will start seeing faults in उसके Shastra. में आप कुछ तर्क खड़ा करेंगे You will raise कि नहीं arguments हो against सकता, हम तो ये the कह रहे statements of Shastra, saying that no, श्रद्धा हो today जाएगी, science speaks like this or that. आपका व्यवहार जो So है you will lose Shraddha in Shastra. आर्जवता नहीं रहेगी उसमें, स्ट्रेट फॉरवर्डनेस, You will no कृत्रिमता longer रहेगी, have straightforwardness in your behavior. You will become यही कहेंगे, duplicitous. इसको बोलते हैं मिथ्याचार, हिपोक्रेसी, You will become a बाहर hypocrite, कुछ दिखाना अंदर कुछ दिखाना, having something inside and showing something else उसमें outside. आपको अभिमान If you रहेगा, will do little bit of bhakti, you will have दूसरों को lot नीचा of pride दिखाना, for that. You will try और to ये अपराध uh, प्रवृत्ति और बढ़ती belittle जाएगी। others, and then this tendency for aparad will keep increasing. This is the result of अगर आप aparad. कर्म योग कर रहे हैं या ज्ञान Now योग कर if रहे you हैं are तो doing उसमें karma yoga or jnana तो yoga, कोई अपराध नहीं है, अगर आपका उसमें अधिकार है then there is no aparad for towards bhakti. If you have adhikar in that karma yoga or jnana yoga, निर्विण्णा there नाम is no aparad in that. न्यासी नामी है कर्मसु तेषु और निर्विण्ण चित्ता नाम कर्मयोगस्तु कामी नाम, भगवान कहते हैं स्वयं, उन्होंने Bhagavan अधिकार himself says he has given दिया this, है, he has निर्णय किया decided है, this adhikar, and he जिनकी says कामनाएं हैं those who have material वो desires, कर्मयोग के अधिकारी हैं, they are और they have जिनका the उसमें adhikar in material karma desire yoga. Those who do not have material desires, जिनकी I इच्छा mean नहीं है those who do उसमें not have desire for karma, लाभ प्राप्त करने की, वो ज्ञान योग के अधिकारी हैं, they are और जिनमें eligible for jnana yoga, श्रद्धस्तु मत and those who have shraddha इसको भगवान की कथा में in सुनते हैं Bhagavan's तो वो katha भक्ति योग का अधिकारी है, has got the adhikar for ना bhakti. तृष्णो ना निर्विण्णो, न ज्यादा आसक्त है He ना is ज्यादा not too परिग्रही है attached उसका, nor too renounced. तो ये तीनों का अलग अलग अधिकार So these three have different दिया adhikar. है उद्धव को, Bhagavan has explained this to Uddhav ji. कोई अपराध की बात नहीं। So there is no aparad and all in that. दीपक जी का प्रश्न ये है कि Question: क्या आप पुनः can you बता सकते हैं re-explain कि what it स्वयं में means प्रसन्न to होना delight क्या है? in the self? स्वयं में प्रसन्न होने का मतलब यही है कि आप Answer: पहले इसको delighting in the self अभी आपको means प्रसन्नता किससे होती you है, should understand first of all now what gives किसी you चीज को प्राप्त करके, satisfaction or enjoyment. That is what स्वयं में first of all प्रसन्न now you होकर have जब to उन check. चीजों में आपकी प्रसन्नता नहीं रहती है, So when you जिनसे आपको delight in the संतोष self, होता है और आप you lose, अपने आप में ही you प्रसन्न do रहते not हैं, become delighted anymore in all this sense enjoyment, all these other बाहरी चीजों पर objects. निर्भर नहीं रहते Meaning, हैं, your happiness does not तो depend on ज्ञान any योग में external sense object. उसका अर्थ होगा कि In आपको Jnana Yoga, what it ज्ञान means is कि that आप अपने आप को समझते हैं कि मैं शरीर नहीं हूँ, you understand, you will ज्ञान योग में understand आप that जब I am समझते हैं तो उससे Atma, I आनंद am आता not the है, body, and in Jnana Yoga, they consider it as जिसको भक्ति Brahma. आत्मा का अर्थ So you जानते delight हैं in that. तो उनको And in भक्ति का Bhakti, अर्थ their Atma means Paramatma. So there it सेवा means का that अर्थ होता you है, will delight in the seva to भक्ति Bhagavan. आनंद का अर्थ, This is what it means. दोनों मार्ग में अलग अलग थोड़ा अर्थ भेद हो जाता है, The meaning changes. The meaning is different in Bhakti Yoga as प्रश्न compared है to that in कि Jnana Yoga. भक्ति निष्काम कर्म और कर्म मिश्र Question: भक्ति में क्या भेद है? Bhakti, Nishkam Karma, and Karma Mishra Bhakti, what are पहले आप the मुझे ये differences पूछो कि आप among these? इन तीनों की क्या व्याख्या So, समझते हैं, first फिर of मैं इन all, तीनों को you समझाने only की tell कोशिश करूँ me कि दोनों में क्या भेद है। what is the meaning भक्ति of का these मतलब three. तो सीधा है, अन्याभिलाषिता शून्यम Bhakti, ज्ञान कर्मादि अनावृतम, Bhakti means आत्मज्ञान this verse निष्कलमम भक्ति as रुत्तम, told by Sri Rup Goswami. कि जिसमें आपकी किसी प्रकार की अभिलाषा नहीं है, तो अभिलाषा Not दो having प्रकार की any है, abhilasha. हाँ मेरे को भोग पदार्थ मिला है, Abhilasha is of two types. और एक Desire मरने is of two types. That I should get sense मरने enjoyment. के बाद क्या One is होगा I उसमें get कोई after निश्चयता death. नहीं है, After death, what will happen उसमें कोई nowadays? Nobody निर्दिष्ट thinks नहीं है about कि that. मर करके Earlier, स्वर्ग people used जाना to है think या that पुनर्जन्म after that I लेना should go to Swarga or whatever. Nowadays, people है, जो even do भी not even believe अगर in आप पुनर्जन्म में विश्वास करते हैं तो reincarnation. उसके बाद में आप So anyway, if you believe in सोचते हैं that कि मैं स्वर्ग and जाऊंगा, मेरे you को अच्छा जीवन मिलेगा, desire that after उसके death I बाद should फिर have मैं ऐसे nice life, I should go to Swarga, इस प्रकार or की even if you अभिलाषा desire like that in आपको this life. भगवान So के not प्रति having any desire of this प्रसन्नता type के लिए ही कर्म and करना, only उसको working भक्ति for the कहते हैं, pleasure of कि Bhagavan, मेरे को मोक्ष that is मिलेगा bhakti. मरने के बाद में, Not स्वर्ग desiring जैसा that कुछ after तो होगा death नहीं, I should get उसकी अभिलाषा moksha. करना ये है भक्ति।
So being rid of all these desires and just working for the pleasure of Bhagavan. Now in Karma Yoga there is Sakama and Nishkam. So Sakam Karma Yoga everyone understands. Perform karma, yagya, dan, charity to get something in return. And the Nishkam is to perform these activities just as duty, that I should do this. भक्ति मिश्र योग क्या? कर्म मिश्रा भक्ति का मतलब है कि आप Karma Mishra Bhakti means that you are doing bhakti, but you also desire material benefits. So that is also Karma Mishra Bhakti means Sakam Bhakti. So you go to temple, mosque or whatever, you do some bhakti and you have your desire that I should get a job or promotion, nice wife or nice husband, desiring all this. So a Karma Mishra Bhakta desires, wants to get material benefits by doing bhakti. सेल्फ क्या है? Next question. विलास मैंने सुना है Question. कि What is the self? सेल्फ ही आत्मा I have heard that the self is Atma, and until recently का प्रवचन चल रहा है, इसमें सेल्फ कहाँ से आ गया है? मैंने तो सेल्फ कहीं बोला नहीं है. सेल्फ क्या है? सेल्फ आत्मा को ही सेल्फ बोलते हैं, तो फिर इसमें प्रश्न क्या पूछ रहे हैं? उन्होंने बोला है कि हालांकि जब मैं कहता हूँ तो यह सबसे ठीक the लगता question है is, when I say I, it seems at best to be the intelligence that is observing thoughts in my mind and not the Atma. It really makes me wonder how one can even know the self, let alone Krishna. Can you please explain how to know the self when it seems beyond my intelligence? जिसका कोई एक सेंटेंस में उत्तर नहीं है. सेल्फ को, आत्मा को कैसे जाने, उसके लिए साधना करनी पड़ेगी. So it cannot be answered in one line. You have to do sadhana. You have to do sadhana for self-realization. You cannot go to the market and purchase self. Nowadays, people take selfie. तो ऐसा नहीं है. लेकिन So self-realization is not like taking selfies. आप कर्मयोग ज्ञान If you have to understand the self, that is what Bhagavan is explaining here. निष्ठा से उसका अनुशीलन करेंगे तो आप सेल्फ तक पहुंचेंगे. If you practice karma yoga or jnana yoga or bhakti yoga properly, then you will be able to achieve self realization. But if you are all the time immersed in planning for money, just working for family members, then how is that possible? Like, so if you want a job, then for 15-16 years you study hard, you study seriously. But when it comes to self, you want to understand that in one sentence you are telling that it is a very deep subject matter, so you have to work hard. It is not that so easily you will understand the self. YouTube से एक प्रश्न है, क्या भक्ति के द्वारा मन को शुद्ध करना तथा चित्त को शुद्ध करना भिन्न भिन्न है? Is making mind or chitta shuddha different in bhakti? Answer no, both are same only. My question was about हिंदी में बोलो. आपने ये अपराध के फल के बारे में बताया, तो मेरा प्रश्न You है spoke about aparad, the result of aparad. प्राप्त होते हैं या कोई So my question is, दो ही do we get all the results what you mentioned for aparad, or you just get one or two? तो वो अपराध सिर्फ if we only see one फल, it's not. वो तो If we see only one effect of aparad, so answer, you need intelligence even to recognize the symptoms of aparad or the results of aparad. हो गया. नवदीप जी का एक प्रश्न है. Next question. मैं कृष्ण और I like to serve Krishna and devotee for their चाहता हूँ, लेकिन pleasure. यह बहुत However, ज़्यादा हो जाता when है. seva becomes too much, I start feeling anxiety एंग्शियस फील करने लगता हूँ because my other activities start getting affected, हैं वो प्रभावित होने लगती हैं. and I also feel मुझे मानसिक physical and mental strain. शारीरिक रूप से तनाव भी होने
क्या Does इसका that अर्थ है mean I am yet not fully aligned to Bhagavan कि मैं भगवान से because I care for myself संतुष्ट and नहीं हूँ prioritize it? क्योंकि मैं स्वयं को बहुत ज़्यादा प्रायोरिटी दे रहा हूँ? अब आपने जो पहली लाइन कही कि मैं वैष्णवों की सेवा करना चाहता हूँ, ये बहुत ज़्यादा हो जाता है। ज़्यादा हो जाने का मतलब So क्या you था? said earlier that I like to serve Krishna and devotee for their pleasure, but पहले when ये seva becomes too ज़्यादा much, हो what जाता do you है, mean by क्या too ज़्यादा much? हो जाता वह वे एंग्शियस फील करने लगते हैं, है? नहीं तनाव हो जाता है उन्हें। तो सीधा बोलो ना, बहुत ज़्यादा हो जाता है मतलब क्या है? What do you mean by seva becomes too much? सीधा बोलो यार, उसमें बोलने के लिए नहीं है उनका। अब ये ज़्यादा क्या हो जाता है पता नहीं मेरे को, तो क्या ज़्यादा हो जाता है? उन्होंने कहा ना मैं सेवा करना चाहता हूँ, तो So I बहुत don't ज़्यादा हो जाता understand what do you mean by seva है। becomes too much. कि क्या ज़्यादा हो जाता है? हरे कृष्णा हाँ, प्रभु जी। सेवा बोलो। तो मेरा प्रश्न ये है कि मेरे को वैष्णवों की और भगवान की सेवा करना तो प्रिय है, So my question is that I do like doing seva to Bhagavan कई बार बहुत and ज्यादा हो Vaishnavas, जाती है, जैसे but भगवान की sometimes भी सेवा seva करते हैं और becomes too much. की सेवा Devotees करते हैं। give lot of तो seva. जब मैं ये सब सेवाएं करने लगता हूँ, तो फिर मेरे को ऐसे So लगता when है कि अरे I मेरा start ऑफिस doing all खत्म these हो गया, sevas, then I तो start becoming anxious that my office work is ऐसे विचार pending, चलने लग जाते my हैं। household तो work जैसे is आपने अभी pending. So I start getting all these बताया thoughts. कि So like how you told Nai it in has the to become class he has to become aligned to that Krishna, the then Jiva has become to become fully aligned to I Bhagavan, then only he can be so fully my happy. understanding is that I try to do seva, what devotees ask me or what Krishna is saying, but I still feel in back of my mind that I cannot do so many things. So I was trying to understand that. I mean, this reservation of not accepting service or just accepting service, what I can do, is it a sign of that we are not still aligned to Krishna and devotees fully? अब हम व्यक्ति हैं Answer: और we हमारी are जितनी भी human beings, and शक्तियाँ हैं, whatever we have, जितनी भी whatever हमारी capacity, सीमित है, qualifications we have, they are all हम limited. भगवान तो है नहीं, We are not Bhagavan. असीमित शक्ति नहीं है हमारी, We असीमित do not have बुद्धि है, unlimited capacity. हमारी जो क्रिया शक्ति है Our सेवा के लिए यूज capacity to करने की, perform वो भी action सीमित है। which we use for doing ऐसा seva, नहीं है that कि is also भगवान आपको limited. मर्जी जो भी दे उसी को आप कर So it is सकते हो, not that anything that is given to you, you will be able to do that. You should understand this. उसका And भी whoever is सीमित है। giving seva to you, अभी हम इसको he should कर नहीं also सकते think हैं, इसकी इतनी that योग्यता why नहीं है, am इसकी I क्षमता giving नहीं so है, much seva to him इसकी when he अपनी doesn't have क्षमता so है, much capacity, he has इसकी other सोचने की work क्षमता also. है। They should also think or अगर no. उनको पता नहीं है इस बारे में And तो if you आप do बोलो not यार know मैं this, then you और can काम tell नहीं them करता हूँ, जॉब भी that नहीं I करता have हूँ, other job, etc. I have my family मैं also, इतना ही कर सकता हूँ, and I can do this much only. इसमें तो कोई परेशानी नहीं है। इसका मतलब ये नहीं है कि आप भगवान से So that does not प्यार mean नहीं है, प्रीति that नहीं है, भक्ति you नहीं do है, not भगवान have से अलाइंड नहीं है। love for Bhagavan, or हमारी you are not aligned, जो शक्ति है वो सीमित है, because our capacity is limited, चाहे मैं हूँ या आप हो, whether it is me or जिसको you. काम दे रहे हैं वो भी सीमित है। And the person who is giving you seva, he also has limited capacity. It is not that he also can do वो भी whatever सीमित ही is शक्ति told है, to him. Bhagavan has given us limited जिसकी शक्ति capacity. जो है वो असीमित नहीं है। No person has got unlimited असीमित capacity. वही है जो चाहें तो Only Bhagavan is unlimited, nobody else. 7 दिन It में is भी only खा सकता he है, who कभी भी can खा lift सकता है। Govardhan यहाँ तो एकादशी के दिन भी without नहीं करने लगता है। eating. Here we start dying doing one day Ekadashi only. तो इसलिए आप उनको प्रेम से बताइए कि ऐसा है कि So मैं you should सेवा tell करने का them बहुत इच्छुक nicely हूँ और सेवा that में मेरी I बहुत have रुचि है, lot of desire for seva, लेकिन मेरी but दूसरी भी कुछ व्यस्तता है, दूसरे भी but I कुछ have काम हैं other जो मुझे engagements करने हैं। also. I have other तो आप obligations समझाएंगे also. वो क्यों? So I cannot do आप this amount, heavy उनको amount बता of दीजिए कि seva. मैं सेवा को टालना You नहीं should चाहता explain हूँ, that you are not trying to लेकिन procrastinate समय जो है or वो escape सीमित from है, seva, but because time is limited, तो उसमें so in that आपको तनाव लेने की कोई आवश्यकता
You need not take unnecessarily any anxiety. Bhakti is not for anxiety. Bhakti is meant for relieving anxiety. तो फिर आनंद क्या है? If bhakti also gives you anxiety, then what ananda is there? उद्देश्य नहीं है हमारा, उद्देश्य आनंद प्राप्त करना नहीं है। आनंद तो उसका Our objective is not to just get ananda. Ananda is like a byproduct of bhakti. That is not our goal. Our goal is prema, doing seva with prem. And when you do seva lovingly, there is lot of ananda in that. That is atmarati. Your mind will remain immersed in that. So there is no question of anxiety in that. ठीक है, तो प्रार्थना श्लोक। सर्वोपनिषदो गावो दोग्धा गोपाल नंदनः पार्थो वत्सः सुधीर भोक्ता दुग्धम गीतामृतम महत् एकं शास्त्रं देवकी पुत्र गीतम् एको देवो देवकी पुत्र एव एको मंत्रस्तस्य नामानि यानि कर्माप्येकं तस्य देवस्य सेवा कार्पण्यदोषोपहतः स्वभावः पृच्छामि त्वां धर्मसम्मूढचेताः यच्छ्रेयः स्यान्निश्चितं ब्रूहि तन्मे शिष्यस्तेऽहं शाधिमां त्वां प्रपन्नम् यत्र योगेश्वरः कृष्णो यत्र पार्थो धनुर्धरः तत्र श्रीर्विजयो भूतिर् ध्रुवा नीतिर्मतिर्मम कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। नमः पंकजनाभाय नमः पंकजमालिने नमः पंकजनेत्राय नमस्ते पंकजांघ्रये। भवे भवे यथा भक्तिः पादयोस्तव जायते तथा कुरुष्व देवेश नाथस्त्वं नो यतः प्रभो। नाम संकीर्तनं यस्य सर्वपाप प्रणाशनं प्रणामो दुःखशमनस्तं नमामि हरिं परम्। हरि ओम तत्सत्।